Hi guys, I hope you're doing great. This is a help session for assignment 2 और इसमें we are going to take a little bit non-traditional approach. इसमें what we're going to do is I'm going to assume that I am one of the students, like low performing students जिसको नहीं समझ में आ रहा कि क्या करना है और then we'll try to explore our way through the assignment specifications and see कि हमें क्या समझ में आता है वो करके जिस तरह से हेल्प सेशन होते हैं कि इंस्ट्रक्टर आपको बताता है कि इस चीज़ का ये मतलब इस चीज़ का ये मतलब है हम उस तरह से नहीं चलेंगे इसमें और इसीलिए ये वीडियो जो है इसकी लेंथ भी थोड़ी सी लंबी होगी सो कीप दैट इन माइंड ऑलराइट लेट्स बिगिन सो बेसिकली लेट मी हाइड अगर आप स्टार्टर पैकेज देखें तो स्टार्टर पैकेज के अंदर यू वुड सी a few things. This screenshot, of course, you won't see, but you'll see code, you'll see A4. But in fact, instead of saying you'll see, since I'm assuming a role of a student, I say I see. So I see assignment number 4 PDF code folder एक बना हुआ है इसके अंदर कुछ classes Python files हैं. I have no idea because I'm one of the dumb students. Sorry about that. Actually, I was a dumb student once. So अगर हम इस PDF को क्लिक करें तो आपको एक कोने पे एक चील नज़र आ रही है विच सीम्स इंटरेस्टिंग वाओ ओके और ये पता नहीं क्या दिया हुआ इन्होंने कुछ समझ में नहीं आ रही क्या है इसको पढ़ते ही नहीं आगे चलते हैं सो बेसिकली दिस इज हाउ अगर आपको ना समझ में है ना कुछ दिस इज हाउ यू स्टार्ट टू एक्सप्लोर थिंग्स बेसिकली होता ये है कि जब आप एक चीज़ को देखना शुरू करते हैं तो आपके जो ब्रेन के जूसेज हैं वो फ्लो होना शुरू होते हैं और फिर आपको ना इसकी इनसाइट्स मिलना शुरू होते हैं आहिस्ता आहिस्ता दिस इज द वे यू गेट द बॉल रोलिंग बेसिकली अब क्योंकि मैं इसको पढ़ नहीं रहा मैं सिर्फ स्कैन कर रहा हूँ देख रहा हूँ कि इसमें है क्या ओके लेट्स स्किप ओके लॉट ऑफ टेक्स्ट scary looking no idea what this is fine एक दफ़ा skip कर लेते हैं so this kind of format is looking interesting क्योंकि हमें याद है कि हमने पहले पेज भी देखा था ये ठीक है आगे चलते जाते हैं ओके काफ़ी ज़्यादा पेजेस हैं इसमें आई एम ऑलरेडी स्केयर्ड एटलीस्ट खोल के तो देखा है ना अनलाइक यू गाइज एडवाइस इसमें दी हुई है और फिर इसके बाद अल्फ़ाबेटिकल लिस्ट ऑफ ऑल सॉन्ग्स in this file. We have again no idea what that is. So let's go back to the beginning. At least we know what the title of this is our assignment. That's progress. Now what we need to do is we need to go to the code folder and we need to probably let's scan के इसके अंदर कौन कौन सी files पड़ी हुई हैं A4 classes. I think let's select all of these and let's open these with Tony. Right. Let me थोड़ा सा इसका फॉन्ट अगर हम बड़ा कर लें एडिटर थीम्स बेसिकली 22 और बड़ा हो सकता है 25 and 19 that's good enough alright सबसे पहले हम देखते हैं A4.py में क्या लिखा है इसमें क्या चीज़ें हैं और एज अ स्टूडेंट अगेन मैं बस देख रहा हूँ इसमें क्या लिखा है एटलीस्ट मुझे यहाँ से ये अंदाज़ा हो गया कि A4.py इज़ दी फाइल जिसके अंदर आपने असाइनमेंट करके जमा करानी है राइट इसके अंदर बेसिकली वो सारी डिस्क्रिप्शन लिखी है सो एक फंक्शन आपने यहाँ पे दिया लाइन नंबर 13 में डोंट नो व्हाट दैट डज बट यू नीड टू फिल इट दैट्स व्हाट वी नो उसके बाद आपके पास दूसरा फंक्शन है बाउंड बेसिक मिक्सेस you need to fill that again and I guess तीसरा function mixes with and this is also empty so basically 3 functions in this assignment you need to implement right just 3 functions nothing more at least ये अभी तक हमें पता चल गया fine what's next again shall we try to run any of these things let's try to do that so let me just open up a terminal here
and I just simply go to CD my desktop and assignment starter and then code. Right, so Python, and if we run, actually अब थोनी से भी रन कर सकते हैं गैस. सो यहाँ पे जाएं, रन करें, कुछ भी नहीं, बिकॉज देर इज़ नो ड्राइवर कोड, देर इज नो मेन फंक्शन, और ये फंक्शन आपने इंप्लीमेंट करने हैं और कुछ भी नहीं आपने करना, कोई ड्राइवर फंक्शन आपने नहीं लिखना. टेस्ट में जाते हैं, टेस्ट को हम रन करके देखते हैं. हमने रन किया तो टेस्ट दीज आर फेलिंग बिकॉज अभी हमने कुछ इंप्लीमेंट ही नहीं किया, और दिस टेस्ट फाइल जिसको हमने छेड़ना भी नहीं है, देखना भी नहीं खोल के, दैट इज़ यूजिंग A4. सो इसको तो हम वैसे ही बंद कर देते हैं ना, क्योंकि हमने खोल के भी नहीं देखनी. A4 samples, this is an empty file. Why is it empty? We have no idea. Maybe शायद टेस्ट जो फाइल है आपकी वो इसको यूज करती हो, maybe किसी in some manner. And then you have this A4 classes.py. This is empty. Why is that empty? Okay, this is not empty. अगर अब आप ये देखें तो इसके अंदर आपको दो क्लासेस नज़र आएंगी. एक तो सॉन्ग की क्लास है और एक हमारे पास मिक्सेस की क्लास है. ये मिक्स क्या चीज़ है? और एक फिर आपके पास क्लास के बाहर एक फंक्शन है which is called pprintmix. This is some kind of a function, and then there's a pprint helper which is used by the pprintmix basically. इसके पहले इन लोगों को एज अ प्रोग्रामिंग कन्वेंशन अंडरस्कोर डालना चाहिए था, विच मीन्स के नॉर्मल लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते. अगर आपने कोई चीज़ प्रिंट करनी है, यू शुड यूज दिस फंक्शन डायरेक्टली, बट दैट वाज अ साइड नोट, नॉट एज अ स्टूडेंट. ऑलराइट, नाउ व्हाट, वी आर स्टक. अब आपने क्या करना है? अब आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया कि आपने 3 फंक्शंस इंप्लीमेंट करने हैं, और देयर इज अ क्लास जिसके अंदर, क्लास फाइल जिसके अंदर 2 क्लासेस हैं और एक कन्वीनियंस फंक्शन है. ये क्लास फाइल्स क्या चीज़ है? ये क्लासेस क्या चीज़ है एक्चुअली? दिस इज अ सॉन्ग क्लास. अगर हम इसको रन करें और कैन वी क्रिएट अ सॉन्ग ऑब्जेक्ट, वैसे ही जस्ट एक्सपेरिमेंट के सॉन्ग ऑब्जेक्ट बनाते कैसे हैं, प्लेइंग अराउंड सॉन्ग. और इसे कंस्ट्रक्टर में अगर हम देखें तो कंस्ट्रक्टर में देयर इज सेल्फ, देयर इज टी, व्हाट इज टी? अ सॉन्ग विद द टाइटल टी. ओके, गुड. एंड an artist A, let me actually go even more smaller. So title is Baba Black Sheep, and artist is going to be, I don't know, 50 cents. In this YouTube link, ये यहाँ पे directly कहीं पे use नहीं हो रहा. Maybe that's for some future project, या फिर this is probably a YouTube link of that song, but we don't know yet. So initialization में basically हम title और artist का नाम store कर रहे हैं, और that's about it. और इसमें आपके पास डंडर मेथड्स हैं 2 songs को चेक करने के लिए कि इक्वल हैं कि नहीं. So basically वो title और artist पे चेक करते हैं. If they are identical, then that means कि both are equal. Less than, one song is less than basically it's comparing the what is comparing? It's comparing artists कि अगर आर्टिस्ट के रिस्पेक्ट से अगर एक वो छोटी अल्फाबेट है, जैसे A is smaller than B, ऑर्डर में अगर छोटा है तो इस मीन्स के इट्स स्मॉलर, ऑर्डर में पहले दिन मीन्स के स्मॉलर. अगर वो दोनों सेम है ऑर्डर में आर्टिस्ट के नाम, तो देन इट चेक्स फॉर द टाइटल. रैपर जो है दैट इज प्रीटी मच एसेंशियली you can think of it as a str. So almost same thing दोनों. तो ये हो गया. अगर हम बेसिकली यहाँ पे S1 को टाइप करें या प्रिंट S1 करें, तो क्योंकि हमने वो रैपर किया हुआ इम्प्लीमेंट, या फिर इसको हम str भी कह सकते हैं, तो इट्स गोइंग टू शो यू वेरी नाइस फॉर्मेटेड स्ट्रिंग विच इज सॉन्ग बाय 50 cents. राइट, सो एक और सॉन्ग हम बनाते हैं, S2 equals to song, I don't know, दिल पाकिस्तान. सॉरी, ज़्यादा सॉन्ग्स मुझे आते भी नहीं है. एंड दिस इज बाय जुनेद
जमशेद, this is song 2. So S2 अगर आप करें, क्योंकि we have implemented wrapper, this shows the nice little formatted. Okay, now the interesting thing, because we have implemented these dunder methods, you can compare these songs. So for example, S1 equals to S2, that's going to give you false, and S1 is less than S2. अब क्योंकि आपका जो less than है, that is comparing artist names, और artist name here is J, S2 में, और S1 is 50, so 5 comes prior to J, so it has to be true. So similarly S2 is less than S1, false. ये जो comparison operation है, you can use this to sort your songs when they're given in a list. Alright, so हमें पता चल गया कि ये एक क्लास है जो कि सॉन्ग्स का नाम और टाइटल और ऑथर जो है वो बेसिकली उसका एक ऑब्जेक्ट बनाती है. फाइन. सो हमारे एक्सपीरियंस में थोड़ा सा इजाफा हुआ कुछ पॉइंट्स का. गुड. आगे चलते हैं. मिक्स. ये मिक्स क्या चीज़ है भाई? इफ़ यू टेक अ लुक एट दिस क्लोजली, इसका हम बाकी सारी चीज़ें छोड़ें और हम इनट में देखते हैं क्या है. इनट में आपको नजर आ रहा है कि देयर इज अ टाइटल और देयर इज अ कंटेंट सी, कंटेंट्स इक्वल्स टू सी. अब हमें नहीं पता कि ये हमने किस तरह बनाना है. सो फॉर एग्जांपल अगर हम मिक्स M1 बनाना चाहें तो मिक्स में हम टाइटल तो हम दे देंगे, और मिक्स आई थिंक जो हमें यहाँ पे देखने से लग रहा है दैट अपीयर्स टू बी अ प्ले लिस्ट ऑफ सम सॉर्ट. सो प्ले लिस्ट को मिक्स कह रहे हैं क्योंकि प्ले लिस्ट के अंदर लिस्ट का वर्ड आता है, तो दे आर अवॉइडिंग दैट प्ले लिस्ट वर्ड. माई collection. अब यहाँ पे जो सेकंड पैरामीटर C, उसने यहाँ पे एग्जैक्टली नहीं बताया कि यहाँ पे क्या देना है और किस तरह से देना है, किस फॉर्मेट में देना है, तो हमें नहीं पता. वी आर स्टक हियर. अगर हम अब जाके देखें तो इसकी डिस्क्रिप्शन हम पढ़ें डॉक स्ट्रिंग्स में थे, तो टाइटल इज अ स्ट्रिंग, contents is a non-empty list. So this is a list basically, or this list what it contains, ये हम documentation में देखते हैं. So this element can either be a song or a mix itself. Okay, so there is where recursion is in the structure. So it can be song S1, S2. Let's say हमारे पास अभी 2 songs हैं, right? अगर हम mix की details में देखें तो it's a title and it's a list of contents. It can be songs, it can be other lists, mixes basically. Again, you can compare 2 mixes together, and there is a less than operator, and again there is a wrapper which is essentially a string. Or what string does, what this function is doing here is कि अगर हम इसको खाली print करें तो आप देखोगे कि इसके अंदर what is doing is returning this convenience function, helper function here. और इसको हमने डायरेक्टली अपने उसमें नहीं यूज करेंगे असाइनमेंट के अंदर, इनडायरेक्टली हेल्प के लिए, डिबगिंग के लिए you can use it basically. Okay, so now what we have here is if we print our mix, so it's going to print this nice little formatted playlist along with its songs. राइट. अब हम एक दूसरा मिक्स बनाते हैं. एक्चुअली ये जो कन्वीनियंस फंक्शन लाइन नंबर 84 में अगर आप इसको डायरेक्टली भी दे देना, लेट्स से प्रिंट व्हाट इज कॉल्ड p print underscore mix M1, so it's going to print exactly that. Alright, so let's create another mix, add another playlist. So basically अब इस playlist के अंदर भी एक और playlist हो सकती है और songs हो सकते हैं, क्योंकि this is what you see over here, right? Mix के अंदर you can have a title and then you can have a collection, and collection is a non-empty list of songs or another mix, which means mix equals to mix, इसका हम देते हैं नाम my mega collection, and now what we do, हम एक लिस्ट बनाएंगे, इसके अंदर हम अपने सॉन्ग्स डाल देंगे जो कि हमने पहले बनाए थे S1, S2, और it can also contain another mix M1. so playlist के अंदर playlist हमने डाल दी,
and this is exactly how it's recursive, because you can see that this is a recursive structure, right? एक playlist के अंदर we have songs and then another playlist, और उसके अंदर भी you can have many playlists at many levels. So इसको हम बंद करते हैं, और अगर हम अब M2 को प्रिंट करने की कोशिश करें तो you see कि this prints the entire list. First basically it prints the songs जो कि उस list के अंदर पड़े हैं, and then it prints recursively that list जो कि उसके अंदर पड़ी हुई थी M1, and so on. So basically अगर आप pprint देखें फंक्शन जो कि इसको recursively print कर रहा है, तो you will see some interesting things. Again मैं इसमें बहुत ज़्यादा नहीं जाऊँगा, but this is an example कि किस तरह वो recursive structure इसमें playlist के अंदर playlist अगर आप डालते हैं तो maintain हुआ हुआ है. So basically what this function is doing is it's iterating over the list. Let's say this S1, S2 and M1 one by one. वो देखता है कि अगर पहला आपके पास एक song है तो उसको आप kind of print कर दो, या arrange कर दो किसी तरह एक formatted string में. अगर वो song नहीं है, वो एक और mix है, तो then you recursively go inside that mix and then you do the same, repeat the process for all of its songs and its mixes. और जैसे भी आप रिकर्जन के अंदर अगले स्टेप पे जाते हैं तो यहाँ पे वो इंडेंटेशन बेसिकली वो बढ़ाता है. किधर गया? सो या बेसिकली इंडेंटेशन वो बढ़ा रहा है. अगर आप देखें यहाँ पे प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स पहले शुरू में थोड़ा होगा, फिर ज़्यादा हो जाएगा अगले सॉन्ग्स के लिए रिकर्सिव. अगर आप डीप डाउन जाते रहेंगे फिर उससे बाद उससे अगला ज़्यादा हो जाएगा. जी आप देखें ना, ये स्ट्रक्चर है, शुरू में देयर इज मिनिमल इंडेंट, फिर उसके बाद जब आप नीचे गए एक्सप्लोर करना शुरू किया एंट्रीज, तो इट्स इंटेंडेड बाय सम अमाउंट. फिर और रिकर्सिवली जब आप अंदर गए तो इट्स इंटेंडेड बाय अनदर अमाउंट, एंड सो ऑन. सो अभी यहाँ से इंडेंट करते रहेंगे जब तक कि वो कंप्लीटली एग्जॉस्ट नहीं कर लेता. सो इट कैन बी रियली कॉम्प्लेक्स structure, but recursive relation is very simple. A mix is a collection of songs and mixes, and that's it. Okay, so यहाँ से अब हमें एक्सपीरियंस गेन करने के बाद हम वापस चलते हैं to our basically specification document. All right, now what? जो खौफनाक डायग्राम हमने पहले देखी थी, now we know कि what that is. It's basically a playlist that contains multiple playlists, और उन playlists के अंदर those contains songs, or figure 1, that's figure 1 which shows this playlist. Fine, moving on. So this document mentions a bunch of rules. इसमें the red thing here says कि आपने recursion यूज करनी है. अगर आपने recursion ना यूज की, क्योंकि आप ये इस कोड को recursion के बगैर भी कर सकते हैं सॉल्व, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, बिकॉज रिकर्जन इज अ मस्ट इन दिस असाइनमेंट. हाँ, फॉर लूप आप श्योर यूज करें, बल्कि इनफैक्ट अगर आप ये देखें कोड, एंड दिस शुड बी अ वेरी हिंट कोड एक्चुअली, क्योंकि आपके जो 3 फंक्शन आपने इंप्लीमेंट करने हैं A4.py में, उन सब का स्ट्रक्चर इस pprint mix हेल्पर से बहुत ही ज़्यादा सिमिलर मिलता जुलता होगा. सो इसको आप अच्छी तरह स्टडी करें और देखें ये किस तरह से काम कर रहा है. Right? So that's a big hint. इसके अंदर भी अगर आप माइनर मॉडिफिकेशंस करें ना थोड़ी बहुत, तो वो तीनों फंक्शन आपके इंप्लीमेंट हो जाएंगे. चलिए इससे बड़ा हिंट अब मैं क्या दूं आपको. Alright. You're allowed to use for loops. और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ना कुछ टेक्स्ट के ऊपर ये छोटा सा 1, 2s और 3s लिखे हुए हैं. तो व्हाट डू दे डू? अगर इसको क्लिक करें तो ये आपको नीचे फुट नोट्स पे ले जाते हैं, विच यू कैन चेक आउट बेसिकली.
एंड वाइल लूप्स आप यूज़ नहीं कर सकते, आप सिर्फ फॉर लूप्स ही यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्यूमेंट. सो आई सजेस्ट यू डू दैट. डोंट यूज़ वाइल लूप्स. ओके, मूविंग ऑन. टाइमलाइन आपके पास टाइमलाइन का अलग डॉक्यूमेंट आपको दिया हुआ जिसमें वो डेडलाइंस वगैरह मेंशन है. आई थिंक आई बिलीव द डेडलाइन इज कमिंग संडे 6th. उसमें एक दो दिनों का इजाफा हो जाएगा सिंस आई एम एक्सप्लेनिंग दिस लिटिल बिट लेट. बट अगेन द असाइनमेंट इज सुपर सिंपल और इसका एक बहुत बड़ा हिंट मैंने आपको दे दिया है. जस्ट चेक दैट print function in that classes file. सो ये उन क्लासेस की डिटेल्स है कि आप डिटेल से पढ़ सकते हैं. बेसिकली मैंने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन आपको कर दिया है. अगर आपने देखना है कि एक ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल ये हमने एक बनाए थे यहाँ पे ना ऑब्जेक्ट्स. सो लेट मी जस्ट क्लोज दिस ऑल. S1 दैट्स एन ऑब्जेक्ट, लेकिन ये किस टाइप का ऑब्जेक्ट है? सो व्हाट्स द टाइप ऑफ S1? दैट्स सॉन्ग. श्योर, लेकिन अगर हम कोड में देखना चाहें कि क्या ये S1 ऑब्जेक्ट सॉन्ग का इंस्टेंस है, ये मैक्स का इंस्टेंस है, तो हम करेंगे इज इंस्टेंस S1 song true. Is instance mix? That's false. If it's instance M1 mix, that's true. So this is how you check. हम ये P1 में देख चुके हैं basically. Right, moving on. So यहाँ पे इस पेज में अब वो जो काम हम कर चुके हैं, करके आ चुके हैं, वो अब यहाँ पे कर रहा है. वो he's showing you an example of a simple playlist which is not recursive. So this playlist, this mix contains all songs. It doesn't contain a mix itself. So what you can do is you can control C as a student. Again मैंने डॉक्यूमेंट पूरी तरह नहीं समझा ना ही आपको समझ में आया, but at least what we can do is we can copy the examples, paste it onto our Thoni, and we can give it a shot there. Actually it's not going to work that way. Basically classes वाली में you start a new doc, you paste all of these instructions and then you try to type कि आपकी नया mix क्या बना. Basically what this mix is doing is the title and then the list of songs. So this is non-recursive. Non-recursive का मतलब है कि इसके अंदर मजीद कोई और प्लेलिस्ट नहीं बनी हुई. तो ये सारे के सारे सॉन्ग्स आपके एक ही लेवल पे आ रहे हैं यहाँ पे. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. एग्जांपल ऑफ अ रिकर्सिव मिक्स, वो भी हम देख चुके हैं खुद से जब हमने एक्सपेरिमेंट किया था. सो ये कह रहा है कि आप ये एग्जांपल कॉपी करो और so basically a th is a mix or it's using this in the list to create another mix, th2, right? I don't want to inspect those. Close. How do you internal error? Okay, I don't want to check this. Okay, so basically you oops, I think I probably wanted to copy this and paste here. So now what you're doing here is you are creating a bunch of songs and a playlist which contains another playlist and a bunch of songs. So if you do th2, so this is the magic of that print function. You did this one, print mix, which indents the recursive playlists with by a proper amount. और जब आपने इसको print किया तो then you see that it prints the playlist and then its contents recursively and then the songs that it has. This is an example of a recursive playlist. Okay, moving on. This is an example of another recursive playlist. अगर आप इसको actually copy करें, हम शुरू वाली एग्जांपल को हम कॉपी करके देखते हैं जो पहले वाली फिगर में थी ना. तो इसको हम अगर कॉपी करें और हम अगर इसको विजुअल स्टूडियो कोड में पेस्ट करें तो आप एक इंटरेस्टिंग चीज़ कर सकते हैं इसमें, और वो है कि यू कैन I didn't copy the indentation
fine, we have a solution. Basically, this entire thing is given in I think in the documents, या something like this. तो इसी को आप कॉपी पकड़ के कर लें और पेस्ट कर दें वहां पे. राइट और यहाँ पे शिफ्ट टैब दबाएंगे तो एक एक करके वो पीछे आता जाएगा. सो दैट्स व्हाट वी नीड. अच्छा यहाँ पे ना यू कैन कोलैप्स दिस एंटायर थिंग. तो इसके अंदर जो सब मिक्सेस हैं वो भी यू कैन कोलैप्स सो दैट यू कैन क्लियरली सी कि दिस मिक्स कंटेन्स टू मिक्सेस. एक मिक्स के अंदर देयर आर फ्लैट सॉन्ग, दिस इज नॉन रिकर्सिव. दूसरी जो मिक्स है दैट इज रिकर्सिव, उसके अंदर मल्टीपल मिक्सेस हैं. सो दिस मिक्स has two mixes. So the first mix again, it is another recursive mix with songs. The दूसरी mix है that is flat, and that's how you can review the structure here in VS Code. अगर आप यहाँ पे टेस्ट्स में भी जाएं तो सो फॉर एग्जांपल अगर आप टेस्ट को ओपन करें विद थोनी तो यहाँ पे देखेंगे तो इसमें ना उसने bunch of variables basically और मिक्सेस यहाँ पे खुद से उसने क्रिएट किया हुआ है शुरू में. तो आप ये कर सकते हैं कि आप ना इसको कॉपी करें राइट यहाँ से लेके नीचे तक CS111 पिक्स तक, कंट्रोल C, गो बैक टू योर क्लासेस, रिफ्रेश, और इसमें यहाँ पे जो नीचे टर्मिनल है यहाँ पे जाके सारी चीज़ें पेस्ट कर लें, प्रेस एंटर एंड इट्स गोइंग टू क्रिएट दैट. सो बेसिकली नाउ इफ यू टाइप CS1 pics then it's going to show you that entire structure. It recreates that basically. Sorry, I have to, but you can check that out on your own computer because यहाँ पे थोड़ा space का मसला है और I have to increase the size of the font. That's why आपको पूरी तरह से यहाँ से मैं दिखा नहीं सकूँगा. So अगर हम इसको again Visual Studio Code में जाके पेस्ट करें तो आप देखेंगे कि ये जो mix है it is composed of this flat mix. This is a flat mix, this is a flat mix, this is a flat mix, this is a recursive mix. So CS111 pics is a recursive mix which is built on top of 4 flat mixes. Flat mixes का मुराद है कि जिसके अंदर कोई recursive mix ना हो, and 1 recursive mix जिसके अंदर you have another mix which is flat. So अब हमें थोड़ा सा वो डिस्टिंक्शन पता चलेगी what's a flat mix and what's a recursive mix. Mix is again another name for a playlist. Again अगर आप यहाँ पे जाएं और डॉक्यूमेंट में देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि people can make playlists or mixes, और playlist को अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि number 1, we henceforth abandon the term playlist to avoid confusion with Python lists. So that's why they're using this name mixes. Alright, अब हमारा जो एक्सपीरियंस लेवल है वो और ज़्यादा बढ़ चुका है और हम जो है वो सेक्शन नंबर 3 भी ऑलमोस्ट ख़त्म कर चुके हैं because we have created a recursive mixes. Now we are in a good position to understand what assignment is saying. नंबर 4 से आपके टास्क शुरू होते हैं राइट. अब टास्क नंबर 4 इज सेइंग सॉन्ग्स इन फंक्शन आपने इंप्लीमेंट करना है. बिलीव अगर आप A4 में जाएं तो दिस इज प्रॉब्ली गोइंग टू बी द फर्स्ट. let me just try to minimize this. Okay, so this is going to be the first function that you have to implement songs in. So it returns a sorted list of all distinct songs that can be reached by tracing through the contents of M. What does that mean? So to summarize basically आपने करना ये है कि let's say आपके पास अगर एक लिस्ट है, एक mix है basically. Let me just quickly, yeah, I think this is a pretty big one. थोड़ा सा छोटा, yeah, this one.
सो आपने यह करना है, आपने एसेंशली इसको फ्लैटन करना है, और फ्लैटन करने के बाद आपने जो इसको सॉर्ट करना है और उसमें से डुप्लीकेट्स रिमूव करने हैं. दैट्स व्हाट यू नीड टू डू. दैट्स राइट. अगर आपने इसमें से सॉन्ग्स की लिस्ट स्ट्रैक करनी, दिस इज व्हाट यू रिटर्न. सो यू रिटर्निंग a list which contains all the songs S1, S2, S3, and this contains no mixes. This is a one flat level, all songs, right? और हर एक सॉन्ग जो है इसमें जो कंडीशंस पूरी होनी चाहिए वो ये हैं कि दी सॉन्ग्स आर सॉर्टेड, आई बिलीव बाय टाइटल. और वहाँ पे आपका ना वो यूज़ होगा, काम आएगा वो जो कन्वीनियंस फंक्शन था गिवन बाय द क्लास, दैट वाज दिस जनरल मेथड लेस देन. और इसमें से डुप्लीकेट्स भी आपने रिमूव करने हैं. सो सॉर्ट करके आप देख लीजिएगा किस तरह करते हैं. वो लॉजिक मैं आपको ऑफ कोर्स नहीं बताऊंगा, राइट. सो अगर हम इसकी एग्जांपल लें तो कौन कौन से सॉन्ग्स आपके पास आते हैं भला. दिस इज अ मिक्स, दिस इज अनदर मिक्स. तो इसके अंदर कौन सा सॉन्ग आपके पास आ गया. दिस इज अ सॉन्ग. सो लेट्स कॉपी दिस एंड पेस्ट इट इन द लिस्ट. This is a song, this is a song, this is a song, sure. Now you have, this is a mix, this is a mix, this is a mix title. अब ये song है आपके पास, this place, this must be place, and then you get the point. Burning down the house, this is a song, and फिर उस में अगले मिक्स के अंदर रिकर्सिवली आप जाते हैं. सो देखिए आप यहाँ पे हर मिक्स के अंदर रिकर्सिवली जा रहे हैं और जो सॉन्ग्स हैं वो आप एक्सट्रैक्ट करके लिस्ट में रखते जा रहे हैं, राइट. सो ये जो लिस्ट है ये सॉन्ग्स की हमारी मुकम्मल होगी. अब देख रहे हैं कि फ्लैट एक ही लेवल पे सारे के सारे सॉन्ग्स पड़े हुए हैं, वो आपने निकाल के रख लिया. ओके, बट डू यू रिटर्न दिस. द आंसर इज नो, बिकॉज दिस इज नॉट सॉर्टेड. फर्दर मोर इसके अंदर डुप्लीकेट्स भी हो सकते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल अगर ये जो मिक्स है वो किसी और मिक्स के अंदर भी होता तो फिर आप क्या करते, like this, something like this, फिर तो उसमें डुप्लीकेट्स आ गया ना सॉन्ग्स के. तो then you need to remove these duplicates also, and then you return this list. That is what you need to do in part number 1, question, the first function basically. ये करना है आपने. Again, to summarize, create a flat list of songs, sort it, remove the duplicates. I hope that's clear enough. और इससे बहुत मिलती जुलती चीज़ हम क्लास में कर चुके हैं, मल्टीपल लेक्चर्स में, आई थिंक. Task 5, basic mixes. Okay, if we have a mix built out of layers and layers of pre-existing mixes, we might be interested in what were the earliest or most basic submixes that the mix was drawn from. नहीं समझ में आई क्या बोला इसने. फाइन, थोड़ा सा जरा एक्सप्लोर करते हैं जाके कि क्या क्या आ रहा है. एग्जाम्पल देखते हैं. कुछ समझ नहीं आया क्या बोला है. बेसिक मिक्सेस. ओके, सो यू हैव टू बेसिकली रीड मल्टीपल टाइम्स टू सी. अगर आपको स्टेटमेंट में समझ में नहीं आ रहा तो फिर आप जाके एग्जाम्पल्स देखेंगे कि एग्जाम्पल्स में क्या लिखा हुआ उसमें. ओके, रिटर्न क्या कर रहा है. असॉर्टेड list of mixes that are reachable from M and whose contents list contains entirely of songs. In other words, in the list it returns यहाँ पे comma आना चाहिए to break the sentence. Are the reachable submixes or submixes that are not themselves recursive in structure. Oh, okay. Basically जो flat playlists हैं वो आपने रिटर्न करनी है. बेसिकली ऐसी प्लेलिस्ट्स आपने रिटर्न करनी है जिनके अंदर फ्लैट प्लेलिस्ट्स हैं. सो फॉर एग्जांपल, where is our code here?
बल्कि इसकी एग्जांपल ही ले लेते हैं यहाँ पे। वो कह रहा है कि एग्जांपल्स डुप्लीकेट्स इन द रिटर्न लिस्ट आर ओके। सो उसने लिस्ट कैसे बनाई है? लिस्ट उसने बनाई है एक मिनट ठहरे, हम दोबारा जाते हैं, अभी भी हमने तरह कंफ्यूजन है थोड़ी सी। हम A4 में जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं क्या बोल रहा है। एग्जैक्टली वही चीज़ लिखी है आई गेस। फॉर एग्जाम्पल फॉर वियर्ड मिक्स इन, वियर्ड मिक्स किया है। अभी हमने वो काफ़ी सारी लंबी चौड़ी एक एग्जाम्पल यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शंस पोस्ट की थी, इसके अंदर हमें कोई वियर्ड मिक्स नज़र आ रहा है कहीं पे? टाइप करके देख लेते हैं हम क्या ढूंढेंगे इसको। ओ श्योर इनफ देयर इज वियर्ड मिक्स। अच्छा, तो इसका मतलब है कि वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि वियर्ड मिक्स, द रीचेबल मिक्सेस आर ओके रियल वियर्ड मिक्स। वियर्ड मिक्स को जरा पहले हम कॉपी कर लें, इसको तो बंद करो, इसको हम कॉपी करते हैं। ओ भाई, कंट्रोल C and control V. Fine, now what? This is our weird mix, और इसमें रीचेबल मिक्सेस कौन से हैं? सो इसमें दिस इज वन फ्लैट मिक्स, इसको मिनिमाइज कर लेते हैं, और इसके अंदर दिस इज वन फ्लैट मिक्स, इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। दिस इज वन फ्लैट मिक्स, इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। तो ये जो ब्लू हाईलाइटेड लाइंस हैं, दीज आर फ्लैट मिक्सेस जिसको हमने मिनिमाइज किया हुआ है। ओके, अब क्या कह रहा है ये? द रीजनल मिक्सेस आर weird itself high. What is high? Oh hi, what is this? Songs in the, यही जो हमने मिनिमाइज किया है, ये this is exactly what high is. Or what was the second one? MREC. M_REC, ये क्या चीज़ है? You have to, you know, थोड़ा देखना पड़ता है because I'm a student, I'm not a professional. MREC, so what is this? Oh, this is the entire thing basically जो कि इस फ्लैट लिस्ट को कंटेन कर रही है, इसका पेरेंट। Okay, and TBH2, what is that? TH2, what is this? Oh, that's the second parent basically. फ्लैट लिस्ट आपने रिटर्न की, फ्लैट लिस्ट का पेरेंट आपने रिटर्न किया, और फ्लैट लिस्ट का ग्रैंड पेरेंट आपने रिटर्न किया। दैट्स व्हाट दे आर डूइंग हियर। LCD and TH, what is that? I suppose LCD is this is a flat list, और इसका पेरेंट जो है that is going to be, I'm pretty sure that it's going to be this one, but let's verify. So TH, no, it's another flat list. It's this one. अच्छा, अभी ऑन ऑर्डर उन्होंने बताया, ऑर्डर में नहीं उन्होंने बताया, बिकॉज ऑर्डर डज नॉट मैटर। द मिक्सेस दैट शुड बी रिटर्न, ओके, बेसिकली भी उसने सिर्फ लिस्ट किया कि कौन कौन से पोटेंशियल मैचेस हैं। अब रिटर्न क्या क्या हो रहा है? द मिक्सेस दैट शुड बी रिटर्न इन द लिस्ट आर TH. So what's TH? Is this one, this flat mix? What's that? Y?
दिस वन, इसको हम मिनिमाइज करते हैं. LCD, what is that? This is another flat list, and you have high, and high is, that's another flat. So जो flat mixes हमने पहले minimize किए थे, आप exactly वही return करें in the list. So oh, click. Now we know okay what this function is supposed to do. Basically आपने इस फंक्शन में, इस पार्ट में करना ये है, दिस फंक्शन कॉल्ड बेसिक मिक्सेस. बेसिक मिक्सेस का मतलब है कि यू नीड टू रिटर्न अ लिस्ट ऑफ ऑल मिक्सेस विच आर फ्लैट. सो आपने रिकर्सिवली इसको स्कैन करते रहना स्ट्रक्चर को, और आप देखेंगे कि इफ अ मिक्स इज फ्लैट यू put that mix in the list. Mix, not songs. So this mix is flat. इसका जो नाम है बेसिकली ऑब्जेक्ट, वो आप यहाँ पे कर देंगे पेस्ट. सो इट इज TH, आई बिलीव इन दिस केस. या इसको पूरा भी कर सकते हो आप, खैर इट डजंट मैटर फॉर नाउ. It's not just the name and title, it's the entire object. ठीक है, this is an object. again मैं यहाँ पे लिख देता हूँ object, not just the name. Okay, अब दूसरा कौन सा जाएगा आपके पास? flat. It is going to be this one. और तीसरा कौन सा जाएगा फ्लैट आपके पास? इट्स गोइंग टू बी दिस वन. सो ऑल योर जॉब इज टू रिकर्सिवली फाइंड ऑल फ्लैट mixes in a big recursive mix structure, right? That's what you need to do. Fine. अब हमारे पास एक आखिरी क्वेश्चन रह गया, mixes with. I wonder what this does. It's not good as Coke, but you know. Mixes with. Given a song and a list. So basically मैं एक नालायक स्टूडेंट हूँ और दो पार्ट्स मैंने कर लिए हैं essentially. Just because मैं बैठा हूँ और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी एफर्ट पुट की है. अगर मैं डॉक्यूमेंट खोल के देखूंगा ही नहीं तो मुझे समझ कहाँ से आएगी? और अभी तक जो हमने देखा है उसमें से तकरीबन 95% चीज़ें हम सारी क्लास में कर चुके हैं. बल्कि ये असाइनमेंट इतनी मुश्किल है ही नहीं है, 2 घंटे का काम भी नहीं है, जिनमें से 1 घंटा 59 मिनट सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना और समझना है कि असाइनमेंट है क्या. बाकी 1 मिनट का काम एक्चुअली इसको बैठ के इंप्लीमेंट करना है. यू नो, आप लोग भी ना, मतलब क्या बोलूँ मैं, खैर लाइव बुरा भला कहते अच्छा भी नहीं लगता बंदा. Anyways, task number 6, the last task remaining, mixes with. Given a song and a list of mixes, we might want to know which of the mixes contain that song. Hi. Oh, this is a simple search problem कि रिकर्सिवली हमने सर्च करना है in that structure, and that's pretty much it. ये भी हम क्लास में कर चुके हैं इस तरह की चीज. Mixes with, जरा कंक्रीट एग्जांपल देखते हैं ना क्या कह रहा है ये. So कह रहा है कि अगर सॉन्ग जो है वो SM क्या चीज है? SM_M. सारे वेरिएबल्स अगेन टू रिकैप, वो टेस्ट वाले जो फाइल है उसमें उसने पहले से बना के रखे हैं. ऑल यू हैव टू डू इज कॉपी देम, paste here, run them, then all of these variables will be available to you. Song Mercy by Max Reacher. So आपने ये सेट करना है, और M list
M list क्या चीज है? It's a list of mixes. It doesn't contain songs, it's not empty. So M list is a list of mixes and list of mixes. ओके, जस्ट इसी को कॉपी कर लेते हैं हम, लेकिन नकल के लिए अकल की ज़रूरत है, तो यहाँ पे ये जो पहले नेम स्पेस है इसको आप डिलीट कर दें. राइट, सो दिस इज योर list of mixes. हम देखते हैं कि इसके साथ भी अवेलेबल है कि नहीं. Yeah, you have to basically import that. But anyways, that's not the point. The point is कि हमारे पास एक लिस्ट आ गई. अब ये लिस्ट जो है वो आपके पास अवेलेबल है, and that is a list of mixes which is recursive. Let's copy this and paste it in Visual Studio Code for easy reference. Control C, and if you go back to code, Control V. अच्छा, ये हमारे पास लिस्ट ऑफ mixes हैं. अब करना इसमें क्या है? करना ये है कि you have to find कि आपका जो सॉन्ग है वो कहाँ पे है with the title Mercy basically. So let's see हमारा टाइटल जो सॉन्ग है वो इसमें कहाँ पे है Mercy के नाम से. Control F, find Mercy. So this is in Gary's list, which is a flat list. इसको हम डाल देंगे लिस्ट के अंदर. Let me just copy Gary's list. लेकिन Gary's list का जो पेरेंट है which is this one, ये भी आपने साथ में रिटर्न करना है. आपने सिर्फ Gary's list को रिटर्न नहीं करना. राइट, ये भी आपने लिस्ट में डालना बेसिकली. और क्या है यहाँ पे? The first two results are in the Gary's list, which is in the mixed. So basically आपने वो फ्लैट लिस्ट रिटर्न की जिसके अंदर वो सॉन्ग है. फ्लैट लिस्ट ना भी हो, इट डजंट मैटर. वो लिस्ट रिटर्न, मिक्स रिटर्न की जिसके अंदर वो सॉन्ग है, प्लस उसके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, वो सारे अपने ऊपर तक रिटर्न कर दिए बेसिकली. एंड देन आपके पास ये सैड सॉन्ग्स के अंदर भी मर्सी है. तो सैड सॉन्ग्स जो है वो भी जाएगा अंदर, और इसका पेरेंट जो है वो भी अंदर जाएगा. अब क्योंकि सैड सॉन्ग्स जो है उसका पेरेंट को है नहीं, बिकॉज दैट वाज द सेकंड पैरामीटर इन दिस लिस्ट एंड दिस इज ऑलरेडी अ फ्लैट लिस्ट. तो दैट्स व्हाट वी गोइंग टू हैव हियर. सो बेसिकली हमारे पास 3 सॉन्ग्स यहाँ पे आ गए, एंड थर्ड वन कम्स फ्रॉम दैट. The song Mercy isn't in the mix, title Why the Big Suit, so on. So Why the Big Suit किधर है? हाँ, इसके अंदर Mercy नहीं है, तो ये आप नहीं डालेंगे उसके अंदर. So basically this is these are the 3 mixes जिसके अंदर या तो डायरेक्टली सॉन्ग पड़ा हुआ है या इसके ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन के अंदर सॉन्ग पड़ा हुआ है. आप ये रिटर्न करेंगे, प्लस आपने मेक श्योर करना है कि इसमें कोई डुप्लीकेट्स ना हो, और दिस हैज टू बी सॉर्टेड. या दिस हैज टू बी अ सॉर्टेड लिस्ट ऑफ मिक्सेस with no duplicates. So yeah, this is pretty much it, or these are the 3 functions that you need to implement. इसके अंदर this is an advice. Unfortunately कैमरा हमारा बंद हो गया, तो let me just recap. And
दिस इज अ बंच ऑफ एडवाइस विच कैन रीड हेयर। और यहाँ पे वो सारे वेरिएबल्स दिए हुए जो क्या वो टेस्ट वाली फाइल से भी उठा सकते हैं या यहाँ से भी उठा सकते हैं, डजंट मैटर। यहाँ पे एक्चुअली कुछ वेरिएबल्स हैं वो बाहर गए हैं, देर कट ऑफ, यू कैन नॉट कॉपी दोज, तो आई रिकमेंड कि आप फाइल में जाएं टेस्ट वाली और वहाँ से कॉपी करके वेरिएबल्स को टेस्ट कर रहे हैं आप। सो दिस इज प्रीटी मच इट। अगर आप एक्चुअली इसको ऑब्जेक्टिवली देखें तो इस असाइनमेंट में करने वाला कुछ है नहीं, सारी चीज़ें हमने प्रीटी मच पहले से की हुई हैं क्लास के अंदर मोरलेस। और ये फंक्शन हमारा जो था which prints the mixes recursively is of absolute supreme importance, इसको आप देखें और समझें, और if you get this you get pretty much everything, the entire assignment, this thing, print mix helper. And with this I hope कि आपको काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो गई चीज़ें कि इस असाइनमेंट में करना क्या है। यहाँ तक डेडलाइन का ताल्लुक है, आई थिंक अगर एक आधा दिन आके कर लिया जाए तो दैट वुड बी ऑनेस्ट इनफ, फेयर इनफ, बिकॉज इस असाइनमेंट में अगेन लाइक आई सेड करने वाला कुछ है नहीं, सिर्फ डॉक्यूमेंट पढ़ के समझना था और यही असाइनमेंट थी, जो कि आई एम श्योर कि आप लोगों ने खोल के भी नहीं देखा होगा। बट एनीवेज, सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम ऑन कमिंग मंडे। खुदा हाफिज़।